Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be doing a very interesting poem about the missing sparrows. So let's just begin with this beautiful poem, Missing Sparrows. The title of our poem is The Missing Sparrows, right? So you just read this poem and learn that how these sparrows they are disappearing from the earth. Earth से कैसे वो vanish हो रही हैं. So no one noticed, कोई भी notice नहीं करता है when the sparrows left, जब sparrows चली जाती हैं. It was just another स्मॉगी विंटर मॉर्निंग. बहुत ही ज़्यादा स्मॉग हो रहा है. पीपल ड्रोव देयर कार्स. पीपल जो हैं दे अपनी कार्स को ड्राइव करते हैं. ड्राइव का ड्रोव 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 एंड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ड्रॉप देयर चिल्ड्रन ऑफ. बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं एट बिजी मॉर्निंग स्कूल्स में वेयर दे लर्न, जहाँ पे वो सीखते हैं दैट पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बैड थिंग. कंटेमिनेट कर देता है हमारे इन्वायरमेंट को. इट वॉज जस्ट अनदर स्मॉगी विंटर मॉर्निंग है, राइट. एंड स्टक ऑन फ्लाईओवर्स, जैम हो जाता है. नो वन नोटिस, कभी भी कोई नोटिस नहीं करता है दैट दे स्पेंड मोर टाइम्स ऑन रोड. सड़कों पे बिताते हैं देन विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा. तो द सिटी ऑफ ट्रेडर्स, ये कैसा है, यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं. ट्रेडेड विद स्पैरोज, स्पैरोज के साथ ट्रेड करते हैं. फॉर एसयूवीज, मतलब दिस एसयूवी कार लेने के लिए. एंड चिल्ड्रंस लंग्स, बच्चों के लंग्स खराब हो जाते हैं. फॉर दिवाली फायर क्रैकर्स चला चला के. पोल्यूशन वॉज गुड फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए भी गुड है. एंड एज मिलियंस बॉनफायर्स, बहुत सारे बॉनफायर्स होते हैं. दे लिट अप इन पंजाब एंड हरियाणा में हम लोग देखते ही हैं. दिल्ली दिल्ली बॉट एयर प्योरीफायर्स लेकर आते हैं, वन दैट प्योरीफाइज द एयर. मास्क होते हैं, कफ सिरप पीते हैं हम लोग. एंड ट्वीटेड इन एंगर, और फिर हम एंग्री वर्ड्स में बोलते हैं. बट इट ऑल स्टार्टेड, ये सब लोग शुरू हो गया है, सब चीज़ें शुरू हो गई हैं ना स्मॉगी विंटर मॉर्निंग में. व्हेन द लास्ट स्पैरो जस्ट लेफ्ट, जब कोई एक लास्ट बचेगी तो कोई भी उसको नोटिस नहीं करेगा. नो वन नोटिस एज विद दैट एवरी ever useful smog hid us from the concise. Concise means the inner space, right? Moving on to the word basket. The first word is smoggy, means it is full of polluted air. That is, of course, a mixture of smoke and fog, right? And SUV, we all know it's the sports car vehicles, sports utility vehicles होते हैं, बड़ी बड़ी cars होती हैं that are operated as family vehicles, kind of Fortuners, Endeavour, Toyota, all these are SUVs, right? एंड ट्वीट मीन्स सेंड मैसेजेस यूजिंग दी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्विटर और ट्विटर. कंसाइज इज द पार्ट ऑफ आवर माइंड दैट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, दैट इज inner concise, right? Inner voice. Moving on to the exercise, first you will be doing these oral exercise where you will be doing all these question answers at your own. Moving on to this, pick the correct option. Sparrows, they are disappearing. They are disappearing because of what? Because of pollution, right? People spend more times on the roads rather than their families, right? Bonfires, they are of course lit in both Punjab and Haryana, right? Moving on to these, right, we have to write the next lines of the poem. For Diwali firecrackers, pollution was good for business. Right, and as a million bonfires they lit up in Punjab and Haryana. देखिए, this Punjab and Haryana, they are the proper nouns, that is why H and P, they are capital, right? Delhi bought air purifiers, देखिए यहाँ पे भी D capital है क्योंकि ये क्या है, ये एक proper noun है and Delhi is a union territory, right? तो air purifier, यहाँ पे हम mask भी लेके आते हैं, mask, cough syrups, right? And tweeted in anger, but it all started, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे यही वाली line आएगी, but it all started, right? Now, but it all started on a smoggy winter morning, right? When the last sparrow will left, then कोई भी इसको notice नहीं करेगा. No one noticed, right? And as that ever useful smog hid us from our inner concise.
right? Moving on to the true and false. Smog is a form of air pollution. Of course, it's true. Firecrackers are good for pollution. They are good for pollution. Of course, it's false. Business pollutes our environment in the most. It's true. Air purifiers can stop pollution. It's false. At some extent, it can stop. People are angry about the level of air pollution in our country. It's true, right? Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own. I hope you all like this poem. This poem was quite interesting, giving a lesson towards nature. Please go through all the word meanings, learn them, and keep smiling. Stay blessed. Thank you.